Hello everyone, very good morning to all of you. So today on 21st July 2024, I am here on my YouTube channel to discuss some of the important editorials of The Hindu. So today we have total 8 editorials which we will be going to discuss in detail. So let's begin without use. So on page number 4 we have article related to science and tech about diseases. So, what is Nipah? And four boy infected with Nipah critical health protocol put into the place in Kerala. So, we'll be going to study about Nipah virus. So, it's like a zoonotic virus. What is zoonotic virus? We will be going to discuss in this article. So, how zoonotic, what it mean? Like it is transmitted from animal to humans, and where it was identified first. Then what are the transmission? What are the symptoms? How it can be prevented? What are the treatment for its prevention? So we will be going to discuss everything in this article. So let's read next article. On page number 10, we have article related to environment. CPCB Control Pollution Control Board Plastic Waste Management. Okay, to check violation in plastic waste trading regime. So what is plastic waste trading regime and how it is like what are the regulation and what are the challenges and what are the solution for this. Like हम कभी भी मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे कोई टॉपिक पर तो we have to give dimension like what are the regulation, what are the key players and what are the challenges. If we discuss every like all this three dimension, then we have to give a way forward to this. Like way forward dena is very important. You have to give your positive perspective to your answer. So on page number 11, direct tax tweak to be constrained the need to protect tax revenue. So this is related to GS3 economy. What is direct tax? What is direct tax ये तो पूछा गया है. Even we will be discuss about indirect tax, benefits, advantages and disadvantages of both direct tax as well as indirect tax. Page number 11, टी इंडस्ट्री सीक्स हायर रोड टेप टैक्स. सो जैसे देखा जाए प्रीलिम्स में यूपीएससी हमेशा अबाउट दिस ईयर घाना कॉफ़ी के लिए रिलेटेड पूछा गया था. एंड प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यूज में देखा गया है कॉफ़ी रिलेटेड. 2022 में टी बोर्ड पूछा गया था. टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बोर्ड और like made by some provision. उनका headquarters किधर है. These are some questions these are some themes which UPSC asks frequently. So we will be going to discuss about tea industry overview, like major producers कौन है, types of tea क्या है, production process कैसी है, what are economic impacts, challenges, and even about the road tape. Like what is road tape? It's remission of duties and taxes on export products. So हम ये देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट्स क्या है रोड टेप के, और ये हमें इंडिया को बेनिफिश कैसे करेगा. जैसे इन्हांस when India exports something, it enhance the economical and monetary of India. And what are even we will discuss about the impacts of road tape. Like Indian products are competitive in global market. This is biggest impact, and it also promote transparency, but it reduce the burden of the exporters. So road tape, even key industries and road tape both are the themes. Okay, on page number 12, animal acquired genes from bacteria that produce antibiotics. So this article is related to science and tech and biology, genesis, genes,
These are some antibiotics. These are some topics which UPSC is asking in mains as well as prelims. So, what is important in this editorial? So, we have to discuss about animal genes producing antibiotics. So, what are the sources, how they produce, what are the mechanism of their production, why and how they get benefit of that antibiotics. So we will be going to discuss about this, like they generally generate antibiotic for fighting infection in them. L- the sources are like frogs, amphibians, insects, and mammals. So how they produce, we will be going to discuss. It will be like a wonderful article to discuss today. On page number 12, prevalence of non-communicable diseases tripled, infectious diseases doubled. नॉन कम्युनिकल डिजीजेस हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि लाइक दे आर chronic disease not passed from person to person, what are the global impacts, what are the major types, risk factor, regional variations, prevention and control, and after last में we will be going to discuss about challenges. and अगर हमने challenges discuss किया है तो way forward भी देना अनिवार्य है. On page number 12, we will be going to discuss rise and sunshine, morning sunlight and your well-being. तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो एस्पिरेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो हाउ मेनी ऑफ देम डू वर्कआउट इन अर्ली मॉर्निंग. लाइक जैसे सनलाइट बॉडी को वेरियस टाइप्स में बेनिफिट देता है. जैसे एक गोल्डन आवर होता है सनलाइट का, जहाँ पर जो सनरेज होते हैं वो वेरी सॉफ्ट और डिफ्यूज टाइप लाइट होते हैं विच आर वेरी बेनिफिट फॉर आवर स्किन, आइज एंड like it gives us a mental peace also. So how we can get benefited by this, वो हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में. और कमेंट भी करना कि कौन करता है वर्कआउट, कौन डेली सनलाइट एटलीस्ट. आई थिंक लाइक वी शुड स्पेंड आवर 10 to 15 minutes इन मॉर्निंग सनलाइट, जो लाइक 7 o'clock या 6:30 से लेकर 8:39 के बीच में जो सनलाइट होती है, वी शुड गो एटलीस्ट फॉर 15-20 minutes. सूर्य नमस्कार किया जा सकता है. ओके, on next page, page number 13, what is gender gap in education? This comes under social justice, GS2, and we will be going discuss like how this gender gap refers to disparities in access, participation and achievements between males and females. Like what are the differences and how this gap, what are the historical content, what are current status of this gender gap, what are the challenges, what are the government issues to tackle this, like beti bachao beti padhao, sarva shiksha abhiyan, midday meal scheme, or various types of government initiatives we will be going to discuss. And let's start the article. की थीम्स हमने सब एनालाइज कर लिया है और उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट आर्टिकल, बॉय इन्फेक्टेड विद निपा, क्रिटिकल हेल्थ प्रोटोकॉल पुट इनटू प्लेस इन केरला. सो जैसे कि हम डेली पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं, पहले आर्टिकल जो दिया है वो रीड करेंगे और देन आफ्टर दैट we'll be going to discuss the background detail of this article.
यार ऐसे क्यों होता है ये? ओके, आई होप इट इज covering the screen. 15-year old is on ventilator support. Kozhikode Hospital Health Minister Vena George rushes to Mallappuram to oversee measures to counter spread of the virus. The Nipah virus scared resurfaced in Kerala on Saturday after the confirmation of a case currently under treatment at the private hospital in Kozhikode. देखा जाए तो ये आर्टिकल में मोस्टली ये दिया गया है कि वायरस कहाँ है, किसको इन्फेक्ट किया है, वो जो यूपीएससी पूछता नहीं है। हमें नीपा वायरस के रिलेटेड जानना है, तो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल बैकग्राउंड डायरेक्टली टुडे। ये मैंने कुछ पिक्टोग्राफिक इमेजेस लाए हैं, जिससे लर्निंग इजी और अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे देखा जाए बैकग्राउंड, zoonotic virus. Zika virus is a zoonotic virus and can jump from animal to human, then human to human. जैसे कोरोना वायरस एक बैट से आया था और then it transmitted from human to human. So this is some type of zoonotic viruses. Reservoir infected fruit bat. जीका वायरस भी एक बैट से आया है। What are the signs and symptoms? Fever, headache, vomiting, muscle pain, cough, sore throat, difficulty in breathing. Diagnosis: RT-PCR, throat and nasal swab, blood, urine चेक किया जाता है. Treatment: supportive care, rest, hydration, treatments of symptoms. Causes: close contact with infected animal or its bloody fluid, contaminated foods. Symptoms of Nipah virus जैसे कि हमने यहाँ देखा है वही है. Now I'll tell you some background detail of Zika virus. So Nipah virus. तो Nipah virus zoonotic disease है, हमने जैसे देखा. It transmit from animal to human and human to human. It was first invented or first seen in Malaysia or Singapore in 1999. यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, पर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था. Reservoir primary resources is like fruits से bats या infected animal, flying foxes, and how it transmit, like when we come direct contact with this infected bat or pigs or like humans, it get transmitted through some saliva, like when we ये क्या कर रहे हैं, छींक रहा है, तो ये जो सब इसकी छींक के जो पार्टिकल्स है वो एयर में जाएगा एंड थ्रू ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन and this person is exhaling carbon dioxide, so this is how it get transmitted. So the symptoms get incubated between 4 to 14 days. then जैसे हमने कि देखा साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखा गया, तो हाई मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 40 to 75%, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. How to prevent this? Then way forward is about prevention. Avoid contacts with sick animal. Use mask. Use precautions. Implement strict infection to control practices. And treatment to, like there is no specific antiviral treatment.
वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, लाइक फीवर के लिए फीवर वाली मेडिसिन यूज़ करेंगे, वॉमिटिंग के लिए वॉमिटिंग, मसल पेन के लिए पेन किलर. This is how this virus is treated. And yeah, notable outbreaks have been seen in Malaysia, Singapore, now बांग्लादेश में देखा गया है, इवन इन अभी इंडिया में भी चल रहा है. तो दिस इज़ हाउ हमने ये आर्टिकल इन डिटेल कंप्लीट कर चुके हैं. सो लेट्स रीड नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर 10. CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आर्टिकल है आज. Central Pollution Control Board plan to check violation in plastic and waste trading regime. So ये article is related to environment. We will read this first and we will then discuss about the background details. The Central Pollution Control Board has begun a national audit of nearly 800 plastic waste recycled across the country. After it emerged, four firms in Karnataka, Maharashtra, Gujarat had issued nearly 6 lakh fake certificates under the Extend Producer Responsibility (EMR) scheme with dated business. इसको क्या हो गया यार पेन को? Scheme mandate business that use plastic packaging material to recycle a certain percentage of plastic use. हमने देखा था ये आर्टिकल प्रीवियसली, हमने हिंदू में डिस्कस किया है कि लाइक हाउ दिस फेक certificates are developed and how this trading practices are being violated. So मैं आज आपको अबाउट वेस्ट ट्रेडिंग रिजिम नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा अबाउट द मैनेजमेंट. हम प्लास्टिक ट्रेडिंग रिजिम भी डिस्कस करेंगे बट नॉट इन वेरी लाइक डेप्थ. GST या डिस्कशन. So let's read this plastic waste management first, then we will be going to discuss about plastic trading regime. So you can quote this in means only about 30% of plastic ever produced is still in use, the rest disposed in other three ways. तो ये 30% प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, 70% इज़ डिस्पोज. तो 100% में से 79% इज़ एक्यूमुलेटेड इन लैंडफिल एंड एनवायरनमेंट. जहाँ पर एक भंडारा होता है, जैसे प्लास्टिक का भंडारा है, वो एक डिग करते हैं कोई एरिया में, प्लास्टिक इज फिल्ड एंड इट इज़ कवर्ड विथ मड. जैसे हम किसी को दफना देते हैं, वैसे दिस प्लास्टिक हैज़ बीन landfill in environment. Only 9% of this remaining 70% is recycled. So देखा जाए तो it's very bad, and 12% is incinerated. कट करके कुछ करके उसको यूज़ में लाया जाता है. तो एक ओथ लेना अपने आप से कि whenever you go in market, take some bag with you, and if that person is giving you some plastic bag or like anything which is harmful for environment, so try to avoid it. and उसको भी कहना कि तुम जो लोग कॉटन मेड बैग या पेपर बैग लेकर आ रहे हैं, तो उनको ये अवॉइड करना कि तुम प्लास्टिक बैग में पैक करके दो, ताकि we will save our mother earth from this plastic waste. and plastic waste, जो प्लास्टिक होता है, it takes around 100-200 year to decompose. तक हमारे 3 जनरेशन आकर चले जाएंगे. So gender and plastic waste management. Decision maker tend to occupy higher decision making position in managing sector, like
formal waste for workforce. What we do in household, then like we purchase something domestic product, then हमारे घर पे कोई ऐसे आता है जो कबाड़ी या कचरा लेकर जाता है, then it goes to formal waste, then it is generated, then it is taken to some cutting machine, रीग्रेनुलेशन, इसका छोटा छोटा ग्रैनुअल पार्ट्स बनाया जाता है, then it is packaged for sale, then it is recycled and it is used like recycle chairs, प्लास्टिक ग्रैनुअल से रिसाइकल चेयर्स बनती है और डोर बनते हैं, मटेरियल्स लाइक बेड का जो पार्ट होते हैं वो भी बनता है। मोस्टली मैंने तो देखा है चेयर्स एंड डोर्स, plastic doors and plastic chairs which are used in parks and all, वो mostly recycle bags और hazardous things उससे ही बनता है। Let's read this article now. Like क्या दिया है, separately the board has filed a complaint with Delhi police against unknown hackers for having alleged stolen several thousand EPR credits from online portal. The Delhi police have to learn the lodge FIR. Okay, ये कुछ important नहीं है। This is a paradigm shift. All this year, companies have no mandate target and were alien to the concept of online tracking system that showed how many certificates were generated and traded. While we are aware of this problem, it is a key to say that every year of implementing GST, goods and service tax, or filing income tax return online, we will be keeping a track of EPR filing by companies. And in case of suspicious filling, we will be keeping a hawk's eye. Errant companies will face heavy fines. Okay. फलाना डिमका बहुत कुछ दिया है which is not important. So what is important? Plastic waste trading regime. ये थीम है यूपीएससी की, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे what is plastic waste trading involves. Like it is, if we have to export or import of plastic waste between countries, the practice has grown and the production and waste generation. So what are the regulation? Like बेसल कन्वेंशन सुना होगा, हम इन्वायरमेंट में शंकर आयस में पढ़ते हैं, ये शंकर आयस या पीएमएफ आयस में पढ़ते हैं, and international treaties that regulates the transboundary movement of hazardous waste and their disposal including plastic waste. hazardous waste में बहुत कुछ आता है, जैसे कि शिप्स, जो शिप होते हैं, जो ख़राब शिप होते हैं, वो एक hazardous waste है। इवन न्यूक्लियर जो इंडस्ट्रीज जो काम नहीं कर रहे, इवन दे आर hazardous waste, क्योंकि वेस्ट ही है ना, जो चीज़ काम में नहीं आ रही वो वेस्ट है, और जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है वो hazardous waste है। समझ गए आप? सो key players, like major exporters of this hazardous waste, are United States of America, European Union and Japan. And major importers are like China has banned from 2018. Now shifting countries are some of Malaysia, Thailand and Vietnam. What are the challenges to practice this waste trading regime? Illegal trading and dumping. Most of the beautiful islands where people are not going and they are not exposed and not like not have been found in overall, जिसका कोई महत्व नहीं है इस इंडिया या सॉरी इन द वर्ल्ड, उस टाइप ऑफ आइलैंड्स पर ये सारा वेस्ट कचरा जमा कर रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन का कोई बसेरा नहीं, जहाँ ह्यूमन का कोई घर नहीं है, जहाँ ह्यूमन रहते नहीं हैं, ऐसे आइलैंड चुने जाते हैं इस डिस्पोजल के लिए। सो इट्स वेरी बैड थिंग, लाइक वी आर, इफ़ वी आर लिविंग, हमारा घर हिंदी में कहा जाए तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम साफ़ सफाई रखते हैं और हम दूसरों के घरों में कचरा जमा कर रहे हैं। जहाँ हम रह रहे
वहाँ का कचरा जा रहा है एक ब्यूटीफुल आइलैंड पर और वो आइलैंड हो रहा है गंदा. So what are the solution to stop this practice and how to prevent this? Like we have to strengthen the global regulation and we have to enforce some of the this UN या जो कोई बड़ी अथॉरिटी है उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहिए. लाइक वी हैव टू स्टार्ट आवर डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी. चाहे इंडिया का कचरा है तो इंडिया ही इसको ट्रीट करेगा और रिसाइकल करेगा, ना कि कोई आइलैंड पर जाके इसको डिस्पोज कर देगा या कोई लैंडफिल में इसको लैंडफिल करके इसको ढक देगा. ऐसे हर जो डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज वी शुड हैव आवर ओन रिसाइकल. We should promote circular economic practices. If we are producing more this hazardous waste, we should pay more taxes. We should pay more funds to this developing countries like USA and like Britain are developed countries. So they should provide more fund to these developing countries for this infrastructure development of recycling industries. Sorry. So let's read next article now. We have discussed this in detail. Next article is related to direct tax tweaks to be constrained to need protect tax revenue. तो मैंने मुझे एक इस आर्टिकल रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. पहले मुझे एक पावर पॉइंट का फाइल मिला था और मैंने वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है. उसमें हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. मेरे पास तकरीबन 7-8 स्लाइड्स हैं. इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव टू मेक एनी नोट्स आउट ऑफ दिस यू कैन श्योरली मेक. एक अच्छी पीडीएफ मिली है. तो लेट्स डिस्कस आर्टिकल फर्स्ट. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman is set to present Union budget on July 23. This will be the first full year budget for a new government. Now it's third term. जैसा देखा जाए प्रीलिम्स के पहले इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस होने वाले थे इसलिए इंटरिम बजट आया था. इंटरिम इज लाइक टेम्पररी बजट. उस पीरियड के लिए बजट लाया जाता है उस 2-3 मंथ्स के लिए. नाउ आफ्टर like NDA alliance of BJP plus some other parties, they have formed a majority in Lok Sabha. So they will, so their ministry, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमन मैम बजट प्रेजेंट करेंगी तो ये एक फुली बजट होगा फॉर दिस ईयर. सो उसमें फिस्कल डिफिसिट डिस्कस किया गया है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 was like 5.63. This numerical data is only important for mains and value addition mains 365 में हम पढ़ेंगे. So read this first, like simplified tax regime, standard deduction, NPS deduction, infrastructure bond, old tax regime, affordable housing, metro cities for HRA, raising type raising tax collection, capital gains, TCS on ज्वेलरीज. सो मैं आपको डायरेक्ट इस स्लाइड से पढ़ाऊँगा ताकि इन डिटेल वी कुड डिस्कस लाइक. सो देखा जाए यार एक स्लाइड ही रहेगी मेरे साथ. लाइक व्हाट इज हाउ इट इज कलेक्टेड. वेट अ सेकेंड, वी विल गूगल दिस. नहीं जाने दो, छोड़. मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट.
हाँ, तो देखा जाए जैसे देखा जाए कि डायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है. सो डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एंड कॉर्पोरेट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स, एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स. ये सारे इनडायरेक्ट हैं और ये डायरेक्ट हैं. तो हम अभी देखते हैं डायरेक्ट टैक्स. यार ये ना डायरेक्ट शिट यार. Sorry guys. Direct tax are paid entirely by taxpayer directly to government. जैसे हम कॉरपोरेशन टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो हम ये डायरेक्ट भर रहे हैं. एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर इज अल्टीमेटली पेड बाय द एंड कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विस. जैसे हमने रोलेक्स की वॉच खरीद ली, उसकी प्राइस है 10 लाख, मान के चलो 10 लाख है. उसमें एक्चुअल प्राइस इसकी 8 लाख है और 2 लाख जो रोलेक्स कंपनी हमसे टैक्स ले रही है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी 2 लाख, और 8 लाख उसकी एक्चुअल कॉस्ट है. जैसे हम कार भी खरीदते हैं या कोई भी, तो उसमें दैट मैन्युफैक्चर एंड द सेलर हु इज सेलिंग इट, इट कलेक्ट्स दैट टैक्स. पहले पहले से ही वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड. जैसे देखा जाए डायरेक्ट टैक्स में, तो टैक्स कलेक्शन करना एक बर्डन ही है. जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे लोगों का इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, कॉर्पोरेट टैक्स करना है. कोई कोई पे करता है, कोई कोई नहीं पे करता. जो नहीं पे कर रहा उनका एक गवर्नमेंट पे बर्डन आता है, लाइक दे आर नॉट गेटिंग इनफ revenue generation in consolidated fund of India, so they could use them further. So it is burden to collect direct tax. और इनडायरेक्ट टैक्स में देखा जाए, जैसे हमको कोई कार खरीदनी है तो हम पहले उसका टैक्स पे कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं कि भाई 8 लाख की कार खरीद ली और फिर बाद में 2 लाख टैक्स दे देंगे हम. ऐसे नहीं होता. ये साथ में ही हमको टैक्स प्लस द कार प्राइस साथ में ही करना पड़ता है. तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड. जैसे गवर्नमेंट ने कार वालों को ही बोल दिया, कि कार कंपनी को ही बोल दिया कि भाई तुम ही टैक्स कलेक्ट करो और तुम ही हमको देना. इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. इट इन्हांसेस इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इन्हांस कैसी हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल सम कंपनीज एंड सम, लाइक जैसे कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स. जैसे हार्दिक पांड्या, पता है ना, वो दे ही उन्होंने बीच में 2 करोड़ की वॉच खरीद रखी थी. उस पर कस्टम ड्यूटीज लगता है. तो ये वॉच इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसको टैक्स पे करना है, इसलिए वो पहले से ही उस आइटम को महंगा बना रही है जितनी उसकी एक्चुअल में कॉस्ट है नहीं. जैसे फॉर्चुनर पहले 35-40 लाख में मिलती थी, आज फॉर्चुनर लीजेंडर की प्राइस है 60 लाख. तो ये क्यों हो रहा है? लाइक इट इन्हांसेस इन्फ्लेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ रहा है तो सरकार को पैसा भी दो, सेलर को प्रॉफिट भी कमाना है. तो एक आइटम का प्राइस एक एडिक्वेट अमाउंट से हाई ही हो रहा है. टैक्स इन्वेजन कैन बी पॉसिबल. जैसे मैंने बताया, कोई पे करता है, कोई पे नहीं करता टैक्स. पर इनडायरेक्ट टैक्स में दिस कैन नॉट बी इन्वेटेड एज चार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज अप्लाइड है. हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर इन्वॉल्व. लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर इन्वॉल्व. डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, indirect tax are regressive. After the income for year,
is earned or valuation of asset determined of on the valuation date. So हम पहले देखते हैं कि लाइक व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स एंड व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, एक टैक्स रेट होता है और उसमें इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, अमाउंट इज इंक्रीज एंड द प्रो टर्म इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इज अपोजिट ऑफ दिस। लाइक उसमें प्राइस कैन बी डिक्रीज also, लाइक कोई अगर आइटम है उसका प्राइस अगर ग्लोबल मार्केट में कम चल रहा है, जैसे वी इम्पोर्ट सम आइटम्स फ्रॉम यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन जापान, जैसे सेमीकंडक्टर चिप। अगर यूरेनियम का या फिर सेमीकंडक्टर चिप जिससे बनती है लिथियम से, अगर उसका प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में बहुत इंक्रीज हो चुका है तो उसका प्राइस कम होगा, फिर सेमीकंडक्टर चिप्स का प्राइस कम होगा, सेमीकंडक्टर चिप भी बिकेगा सस्ते में, तो उसका जो टैक्स लगेगा वो कम ही होगा। A regressive tax is a tax imposed in such manner that tax risk can be decreased as amount to subject to taxation. So यही है, like what is progressive and what is regressive। ये तो हमने देख लिया। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड, पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम डायरेक्ट टैक्सेस के, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के। Direct taxes are progressive as they depend on paying capacity. Richer person is taxed more compared to poor person. जैसे अंबानी शादी कर रहा है, 5,000 करोड़ अभी तक उसने शादी में लगा दिए, तो टैक्स कितना पे करता होगा ये सोचो। और एक पुअर पर्सन विथ इनकम ऑफ 1,50,000 एनुअली, वो टैक्स पे कर रहा है 10,000 5,000 गवर्नमेंट को एनुअली। Low income tax rate, decreased tax revenue and tax invasion, hawala transaction. Hawala is something like एक कोड दिया जाता है to transfer money. It's like illegal. Direct tax do not increase the cost of modern machineries technology. Direct tax are not inflationary. जैसे मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन नहीं होता डायरेक्ट टैक्स में, जो रेट है वही फिक्स्ड है। It is a ideology very difficult for a person to pay some amount after it have received in hand। जैसे एक बार आपको कैश में पैसे आ गए तो कैश में पैसे को टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ही कैन इन्वेस्ट इट थ्रू इजीली। ये डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स का है। An act is widening the scope of tax deduction as same source TDS tax deduction or TCS. Thus, a direct tax is converted to an indirect tax. Let's read डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट, नहीं एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। Since the price of commodity of service is already inclusive of indirect tax, the customer, the ultimate taxpayer, does not feel a direct pinch while paying indirect tax, and hence resistance to indirect tax is much less compared to resistance to direct tax। जैसे फॉर एग्जांपल किसको शौक है फॉर्चुनर खरीदने का, तो चाहे 40 लाख की क्यों ना हो या 50 लाख की क्यों ना हो, जैसे टैक्स के साथ हो, तो वो सोचेगा नहीं कि भाई यार, मतलब अगर ऐसा होता है कि भाई 40 लाख की फॉर्चुनर है और सरकार उसको बोले कि भाई तुम फॉर्चुनर खरीद लो और उसके बाद 10 लाख जो रिमेनिंग टैक्स बचा है वो पे कर लो, फॉर्चुनर लेके तो वो खुश हो जाएगा, पर उसको फिर से 10 लाख भरना है तो ही विल बी लाइक यार क्यों ही भरूँ, अभी तो फॉर्चुनर मिल गई। ही विल फाइंड सम अदर वे टू like to in like to invade of that 10 लाख रुपीस। सो 50 लाख ही भरेंगे तब फॉर्चुनर मिलेंगी, तो उसको डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स।
तो उसको इतना कुछ लगेगा नहीं. Manufacturer dealer physiological favor indirect tax that who collect the tax in his invoice and pay it to government has physiological feeling that he is only collecting tax and is not paying out of his own pocket. जैसे सरकार ने पहले ही बोल रखा है भाई तुम्हारी जो प्राइस है उस पर इतना टैक्स लगता है तो प्राइस प्लस टैक्स तुम कलेक्ट करो. एंड वी डोंट वांट फ्रॉम योर पॉकेट. अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म एज रिग्रेसिव. रिग्रेसिव टैक्सेस हमने पढ़ा है. Regressive taxes is one in which taxes decreases as the payer income increases. Lower income is taxed at higher rate while higher income is taxed at lower rate. However, absolute tax liability may increase. Taxes तो पता होगा ना, चाहे कस्टम ड्यूटीज पे 18 प्लस 18 20 या 8 36% टैक्स प्लस कस्टम ड्यूटीज. लिक्योर पे कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग चार्ज करती है. 14%. Indirect tax do not depend on paying capacity since the indirect tax is uniform tax payable to commodities same whether it is purchased by poor or rich. हम कुछ ज़्यादा ही इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं बट आपका एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट होगा. Disadvantages of indirect tax. Higher custom excise duty, increased smuggling, hawala trade and mafia gangs, which is harmful in May. Similarly, high excise duty is leads to tax invasion. जैसे कि देखा जाए फेक कंपनीज बनाई जाती है अदर कंट्रीज़ में फॉर टैक्स इन्वेजन. मृणाल सर ने इन डिटेल बताया था इकोनॉमी में कि इफ़ यू हैव टू पे 20% या 25% टैक्स इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एंड those who want to manufacture and pay less taxes, so they are making companies in foreign and like first they are making countries in the foreign countries where taxes are for manufacture is less, and they are opening a branch in India and showing that we are foreign countries company, and through portfolio they have come in India to invest and manufacture something. सो पहले वो सरकार को यहाँ पे अगर समझो 5% टैक्स पे कर रही है तो दे वोंट पे इन इंडिया ना. लाइक अगर इंडिया की कंपनी होती तो दे हैव टू पे लाइक 20 25 30 35% टैक्स. तो 5% का और 20% का. सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लाइक हाउ दे आर लीडिंग टू टैक्स इन्वेजन. हवाला सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट. लाइक दे आर मेकिंग कोड्स लाइक इफ 50 लाख कैश लेके जाना है तो आपको पुणे से दिल्ली, तो यू वोंट टेक अ बैग एंड गो लाइक 50 लाख का कैश है चलो 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 दिल्ली चलो. ऐसे नहीं होता. यू विल पे एजेंसी 50 लाख in cash. They will give you a cheat code. This agency has some different types of agency in Delhi, Mumbai and various state, even in various countries they have some agencies. So ये चिट कोड हमें यहाँ पर देना है and they will give us 50 lakh in cash. They will keep some commission like they will keep 2 to 3 lakh in commission. वो 47 lakh आपको दे देंगे. कमीशन बेसिस पे काम होता है. बट वी आर गेटिंग 2 लाख से ज़्यादा कैश रखना. इट्स इलीगल एंड 50 लाख कैश. Higher custom duties and excise duties increase cost of modern machineries and technology. Indirect tax increase the price of products and hence are often perceived as inflationary. Good time हो चुका है. Like it's already 40 minutes I'm recording and we are still remaining with 5 articles. So let's we have discussed more than enough. क्या है
So, so let's read next article. Tea industry seeks higher road tax rates. So जैसे कि बताया था, tea industry is always in news. What is tea industry? Let's discuss this first. Like tea industries in cup, tea industry. Oh, sorry, tree not tea. Tea industries is a mostly widely consumed beverage globally. पूरे दुनिया में सब लोग चाय पीते हैं, सब कॉफ़ी पीते हैं. So it's like widely consumed beverage. So which countries is major producer? China, India, Sri Lanka and Kenya. China is famous for green and oolong tea, while India is famous for Assam and Darjeeling teas. Sri Lanka is famous for Ceylon tea. Ceylon पहले श्रीलंका का नाम भी हुआ करता था. श्रीलंका पहले सीलोन था. कंट्री का नाम सीलोन था. Kenya is famous for black tea. So types of tea: black tea, green tea, oolong tea, white tea, herbal tea. प्रोडक्शन होता है कल्टीवेशन के लिए, उसको स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड. टिपिकली इट इज़ हार्वेस्टेड बाय हैंड्स, जैसे हम देखते हैं कि हाथ से तोड़ा जाता है टी को. और इट इन्वॉल्व्स रोलिंग, ऑक्सीडाइजेशन एंड ड्राइंग. इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो इट्स लाइक समथिंग मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हम इमेजेस देखते होंगे कि ऐसे पहाड़ियों पर टी कल्टीवेशन हो रहा है और बहुत से लोग ऐसे अपने पीठ पर एक बैग लेके पत्तियां तोड़ रहे हैं. तो इट गिव्स एन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल्स. सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट कमोडिटीज, एक्सपोर्ट हो रही है चाय पत्ती, रेवेन्यू इज जनरेटेड अगेन. सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बेनिफिट होता है. चैलेंजेस देखा जाए तो एडवर्स टाइप ऑफ climatic change affect the crop yield, labor issues including fair wages, trend growing demand for organic and specially tea teas, increasing popularity of tea tourism. ऐसे कुछ है. मैंने हम सब डिस्कस कर चुके हैं अबाउट टी इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल रीड अबाउट रोड टेप. तो व्हाट इज रोड टेप? Remission of duties and tax on export product. So it is scheme introduced by Government of India to replace merchandise export from India schemes. What are the objective of road tape? To boost India export by reimbursing various embedded टैक्स, जैसे फलाना 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 डिमका 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 6 टाइप के टैक्स को एक ही रोड टेप टैक्स बनाया है. जैसे जीएसटी लाया गया, तो वैसे ही एक रोड टेप टैक्स है to boost export in a simple tax which was launched on 1st of January 2021. It is applied to all sectors and products. It is administered by Ministry of Commerce and Industries. ये आपको आर्टिकल में नहीं दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ. प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो. ओके. What are the benefits of this road tax? So enhance the competitiveness of Indian export. एक सिंगल टैक्स पे होगा तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथनिंग होगी ना. या लाइक फलाना 4 कंपनी है, 4 के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, 4 अपने अपने टैक्स लगा रहे हैं, क्या चल रहा है पता नहीं. पर रोड टेप क्या करेगा, एक फिक्स रखेगा कि भाई स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें सबको फ़ायदा मिले. Simplifies the process of exporters, aim to cover the hidden cost not addressed by previous scheme. And challenges देखा जाए तो timely insurance of refund नहीं मिल रहा, या फिर adequate coverage of all embedded tax and duties. So this is all related to road tax. I don't think we need to read this article. बताया गया है कि लाइक एक्सपोर्ट जेन्यून दार्जिलिंग टी के रिलेटेड है. ये जो व्यक्ति है वो ऐसे हाथ से चाय पत्ती तोड़ के अपने बैग में डालते हैं पीछे. ओके. सो लेट्स रीड नेक्स्ट आर्टिकल. 4 आर्टिकल फिर भी पेंडिंग है.
Animal acquire genes from bacteria that produce antibiotics. Okay, so let's read this article first. A group of small freshwater animal protect themselves from infectious disease and stolen from bacteria. According to new study, the tiny creature called below-dead rotifers, which means crawling wheel animal. They have a head, mouth, guts, muscle and nervous like animal. Fungal infection studies on 100 of the genesis that had acquired from bacteria and other microbes. Some of the genesis produce resistance weapons, some such as antibiotics and antimicrobial agents in rotifers. Prior researchers found that rotifers have been picking up DNA from surrounding from millions of years, but new study is first discover the use of the genesis diseases microbes. This complex genes some are found in other animal were acquired from bacteria but they're gone on evolution. मेरे को इतना आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा. मैं इसकी बैकग्राउंड डिटेल इन डिटेल बता सकता हूँ बताऊँगा आपको कि लाइक हाउ दिस एनिमल आर क्रिएटिंग antibiotics in themselves and how it works. So certain animals have genes that enable them to produce antibiotics compound which can be pivotal in fighting infections and develop new antibiotics. So what are the sources? Like amphibians, insects, mammal amphibians like frog, toads can create through their skins. Insects immune system produce antimicrobial peptides. Mammals, humans and other mammals produce deficins and catalycins. It's something related to antimicrobial, guys. Mechanism benefits, natural defense mechanism. Antimicrobial means it's something we don't have to purchase any medicines and all. Antibiotics like pesticide disturbs bacterial cell membranes. अपने आप बॉडी में वो क्रिएट होता है, अपने आप हीलिंग हो जाती है. Challenges: difficult in mass producing these components, like it's an effective and safety in human applications. Exploring animal genes for antibiotic production offers a promising avenue for a new treatment and combating antibiotic resistance critically for future health solution. So जितना था हमने पढ़ लिया. Let's move to next article now. Prevalence of non-communicable disease triple from infectious disease double. हमने ये आर्टिकल में डिस्कस किया था इन डिटेल, लाइक व्हाट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जूनोटिक डिजीजेस. यहाँ पर मैं आपको रिमेनिंग पार्ट आई विल कवर इट. लाइक मैंने आर्टिकल पढ़ रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. लाइक रिलेटेड टू सम स्टेट्स डेटा दिया है विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एंड यू कैन कवर देम फ्रॉम मेंस 365. दोज हु आर गिविंग अटेम्प्ट इन 2025 तब आएगा मेंस 365, तब न्यू डेटा भी होगा, ये पुराना डेटा हो जाएगा, तो अब तब कवर कर लेना. मैं आपको अभी बताऊंगा कि नॉन कम्युनिटी डिजीज इंपॉर्टेंट कैसे ट्रिपल्ड कैसे हुआ और इन्फेक्शियस डिजीज डबल कैसे हुआ. So what is non-communicable disease? So it is chronic disease not passed from person to person. They include cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease and diabetes. जैसे डायबिटीज हो किसी को तो वो ह्यूमन से ह्यूमन पास नहीं होता, जैसे टच से या कुछ सलाइवरी ग्लैंड से या कुछ ऐसे पास नहीं होता. इट्स नॉन कम्युनिकेबल, समझ रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. So like what are the global impacts? Leading cause of death worldwide, responsible to 70% of the death. Major types: cardiovascular disease हुआ, cancers. कैंसर पास नहीं होता, ऐसे कम्युनिकेबल नहीं होता, जैसे जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन पास नहीं हो रहा. क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा. रिस्क फैक्टर: बिहेवियरल यूज हो कैसे रहा है, टबाको यूज, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी,
फिजिकल इनएक्टिविटी एस्पिरेंट्स में देखी जा रही है, तो गाइस डू वर्कआउट फॉर 10 to 15 minutes एटलीस्ट, एंड सूर्य नमस्कार 10 to 15। गो फॉर अ रन, लाइक 1 किलोमीटर दौड़ कर आओ। इसमें सब मिलाकर 40 मिनट जाएंगे। ऐसे ही टाइम पास करते हो 40 मिनट, ये तो आपके बेनिफिट्स होंगे। और मेंटली पीस भी इंक्रीज होगा आपसे। मेटाबॉलिक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओवरवेट भी हो रहा है। जैसे घर पे बैठ के मैं पहले 62 kg का था, अभी लाइक इन 2022 जनवरी आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, तब मेरा वेट 65-66 होगा, एंड नाउ आई एम 78। सो लाइक weight increasing is something very bad for studies and even for diseases, metabolic diseases. Like, what are the regional variation? Higher prevalence in low and middle income countries. This variation has to be seen in majority. What are the challenges? Inadequate healthcare infrastructure in low income region. Rise healthcare costs. Need to increase public awareness and education. So in detail हमने ये आर्टिकल पढ़ रखा है। मुझे नहीं लगता आपको ये आर्टिकल रीड करने की ज़रूरत है। हमने देखा ग्लोबल इम्पैक्ट, मेजर टाइप्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, रीजनल वेरिएशंस, what are the challenges and how it can be prevent, like how it can be prevent, promoting healthy lifestyle, early detection and treatment, and stop using some health reduced risk factor like tobacco and various types of drugs, and like more content of oil use. So rise and shine, next article, rise and shine, morning sunlight and your well-being. यार ये क्या होता है ना, हमेशा मुझे पता नहीं। ओल्ड लैपटॉप। ओके, राइज एंड सनशाइन, तो मैंने जैसे बताया आपको, पहले हम देखेंगे इमेज। हेल्थी बेनिफिट्स ऑफ द सन, prevents vitamin D deficiency, fights stress and insomnia, produce relief from skin disorder, helps bones, ये छोड़ दो वर्ड बहुत टफ है, maintain your circadian rhythm, जो दिमाग के जो हालात है सही चलते हैं, फाइट सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, regulate body temperature, reduce mortality rates, relief from jaundice, heal wounds, reduce chronic path, fight stubborn weight gain. So सनलाइट बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सनलाइट synchronic in photo entertainment. So sunlight is refers to the alignment of photo entertainment, like with a natural light pattern. Golden hours होते हैं, provides soft, पहले आर्टिकल पढ़ेंगे हम आज। We human are affected. We human are affected by cycle of light. 1 minute, guys. I need to drink water. Our body have 24-hour circadian rhythm that translated into physiological process such as hormone secretion, which is drive our action to stay environment, and three there before perform the right activity at the same time. Light serves an alarm clock. The light synchronization photo entertainment happen in the brain by brain lightning signal from eye. Many other species also depend on light to produce their daily routine. When these light patterns are disrupted, their natural rhythm and behavior can be affected. As example, tourism operate in Maldives take boat loads of visitor out at night and shine bright light. 4,000 volt of the ocean surface biological activity to water pick up to morning and tourists to get see whale sharks. A pattern of earlier sleep. यार, a pattern of earlier sleep is what
is going on? Pattern of earlier sleep timing associated with low risk of majority depressive disorder. जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ. I to sleep 9 a.m. Up, sorry, मैं 9 p.m. around 9 p.m. I sleep and I wake up at 3 a.m. 6 hours of sleep, and I start 3 a.m. I start with a GS. Then after at 6 o'clock, yeah, 6:30 I start recording till 8 I upload it, and this is how I work. Morning birds, morning diurnal preference in classification for people who prefer early sleep and who will rise early, peak in early in the days, and condition is associated with reduced risk of obesity well as better academic performance. Several studies have shown this pattern of earlier sleep time is associated with lowered risk of major pursuit and disorder. सो यही है कुछ आर्टिकल में, जो बैकग्राउंड डिटेल में भी यही था. हमने बेनिफिट्स ऑफ द सन पढ़ लिया, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बेनिफिट्स देख लिए. लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे जो हम बहुत बहुत ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, सोशल जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक है, मैंने परसों ही पढ़ा है, तो आई विल इवन डिस्कस माई नोट्स विथ यू गाइज. सो जैसे कि ये लड़की इक्वल और क्वेश्चन मार्क लेकर खड़ी है कि क्या जेंडर गैप इक्वल है. Reproductive health, empowerment and economic. India stands rank at 131 out of 189 country in gender equality index according to 2020, जो अपडेटेड है, न्यूज़ आर्टिकल में दिया है, एंड वी विल डिस्कस दिस. ये तो मेरे इमेज थी जो मैंने लगा दी. हाउ बेसिस आर प्रिवेंट पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक. People believing that women having the same right as men is essential for democracy, but in political only 27% of women participation has been seen. In education, people believe that university is more important for men than women. It's totally wrong. Like 46% believe that people, men have more right to job than women. ऐसा कुछ नहीं है. So let's read this article first now. What is gender gap in education? What do figures from Unified District Information System for Education All India Survey on higher education indicates? Are more likely to compensate secondary education when they have access to it? What need to be done to ensure girl and boy don't drop out? Mostly, why dropout rate has been increased. So I will share something from my notes of social justice. Issue with primary educations, like enrollment of a government school has been decreased because facilities are not there. Government facilities infrastructure is not well developed. People are more people more prefer to private schools due to perceptions of better quality of education. There are shortage of faculty. Student teacher ratio is like 30 is to 1. Like when we are in primary school or preschool education, जैसे LKG UKG, it should be like 1:8, like एक टीचर 8 स्टूडेंट के पीछे, क्योंकि बच्चों को संभालना इतना इजी नहीं है. लाइक 30 बच्चों को, मतलब बच्चे जैसे जिनको कुछ समझ नहीं आता, दे आर लाइक अ किड. तो हाउ कैन वन टीचर कैन मैनेज 30? एंड एट जैसे as per science it has been proved, like at until age of 3 brain develops at the faster rate. अगर आप इस एज में उस ब्रेन को वो डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो लाइक इट वोंट बी दैट मच, होशियार बच्चा नहीं बनेगा. ऑनेस्टली, देयर आर शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कोई कोई गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा चल रहा है, एक क्लासरूम है, यहाँ पे ऐसा कुछ बेंचेस लगा दिए आड़े, और यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास नंबर
फर्स्ट स्टैंडर्ड, यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड, यहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड, ये साथ में ही चल रहा है, केओस चल रहा है, सब भसड़ मची है. लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटी पीडब्ल्यूडी इन स्कूल, फिजिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स या फिर scheduled tribes के student, they are not into education because they don't have awareness of that. Girls child drop out. Why dropouts is seen? So the major reason of dropout is no vocational useness of this education. जैसे vocational use नहीं आ रहा ना, जो घर में हमको काम करना है, जैसे बॉय को अगर एग्रीकल्चर फार्म है तो उसको खेती करनी है, या गर्ल को घर संभालना है, तो ये वोकेशनल यूज़ में नहीं आ रहा एजुकेशन. और ड्रॉप आउट भी इसलिए भी हो रहा है कि आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन वी हैव टू पे फीस. देर इज़ नो फ्री एजुकेशन टाइप थिंग आफ्टर इन सेकेंडरी एजुकेशन. इट्स नाइदर फ्री और नॉर कंपल्सरी. आफ्टर 14th class you are allowed to work in some factories where childs are allowed, which are non-hazardous, और जैसे कि पैकिंग इंडस्ट्रीज, बैंगल इंडस्ट्रीज, वीविंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर चाइल्ड वर्क अलाउड है. सो देर आर ड्रॉप आउट्स हैव बीन सीन बिकॉज ऑफ दिस. लाइक प्रेजेंट, even present pattern of this board exam, to just to achieve marks, a single sheet of paper cannot decide your future. Like, only you have to get board percentage. It's like something a very narrow minded study. We don't have flexibility. Like, we don't go practically, like physical practical हो रहा है. अगर हम एक टॉपिक भी स्टडी करना चाहते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं, जस्ट पढ़ा फलाना डिमका जो नोटबुक में दिया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, टीचर्स आर टीचिंग अस एंड लाइक एवरीथिंग इज डन. बट वाई डोंट वी डू प्रैक्टिकली? स्कूल में एक प्लांट लेकर आया, एक सनलाइट विंडो में रख दिया, और द प्लांट इज मूविंग टुवर्ड द विंडोज. सो दिस इज समथिंग प्रैक्टिकली ना, कि जैसे लैब में ऐसे सब होना चाहिए, जैसे एक स्कूल लैब में ये सब होना चाहिए कि वाई दिस प्लांट हैव मूव टुवर्ड सनलाइट बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. लाइक जैसे प्रैक्टिकली स्टडीज बता सकते हैं कि लाइक सनलाइट यहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट उस तरफ मुड़े जा रहा है. ऐसे कुछ हो नहीं रहा है. ये तो रहा है एक एजुकेशन. लाइक once there are two quotes, like Aristotle have said, educating mind without educating the heart is no education at all. And our great leader Mahatma Gandhi ji has said, if education fails to create a sound model character, then it is no education. Agar you are unsound person जो पढ़ कुछ रहा है और दुनिया में कर कुछ रहा है, जैसे कि हमने देखा गया है पूजा खेड़कर का न्यूज़, सबको पता है कि क्या हो रहा है. इथिकल, उन्होंने जीएस फॉर एथिक्स पढ़ा होगा, बट इफ व्हाट इफ शी इज शी इम्प्लीमेंटिंग एथिक्स इन हर रियल लाइफ? शी हैड लाइक समथिंग, उन्होंने अटेम्प्ट्स दे चुके थे, उनके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो चुके थे. उन्होंने फेक आईडीज़ बनाई, फेक मार्कशीट बनाई, फेक आधार कार्ड बनाया, फेक नेम से उन्होंने री अटेम्प्ट देकर उन्होंने 849th रैंक पास करके ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने रैंक पाई है. और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके घर में बहुत से करोड़ में कैश देखा गया है. इवन दे हैव लैंड क्रूजर कार विच इज़ अराउंड 50 लाइक 2 करोड़, 1.5 करोड़ की प्राइस है वो उस कार की. शी इज she has that Pooja Kedkar has Audi car and VIP नंबर, उनकी कार का नंबर है 5000. क्या चल रहा है? मीन्स लाइक what is going on in this country India? It should stop as soon as possible because corruption will lead this country at this stage like worsen, like it's something worse. So let's get back to the topic now. Like, where do the gap lies? What do India statistics shows? What is the next challenges? So I have something I will directly share with you. Like, what is gender gap? Gender gap is education gap in education in India
which refers to disparities in access, participation, and achievement between male and female situations. So, what are the roles of education? What are the roles it play, like fundamental to growth and development of people politically, economically, and socially? Helps in creating justice and equality, provides sustainable routes to poverty, it decreases poverty. जैसे पढ़ेगा इंडिया तो पॉवर्टी भी कम होंगी, जस्टिस मिलेगा, इनइक्वालिटीज कम होंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. Strengthening of democracy essential to enhance in India's competitiveness in global economy, fulfillment of demographic development. What are the current status? So significant process is closing to gender gap of primary and secondary level. Gender parity index in primary and secondary education has improved, indicating increased female enrollment. What are the challenges? Socio-economic challenges, poverty, child labor, gender discrimination hinder girls school. जैसे most of this girl are hired in this weaving industries, bangles industries, अगरबत्ती मेकिंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पे लड़कियाँ या चाइल्ड लेबर बहुत हो रहे हैं, और इसके कारण this dropout has been seen and this gender gap has been seen. Challenges: infrastructure challenges, lack of adequate infrastructure, और गवर्नमेंट अगर आपको एक अच्छी स्कूल प्रोवाइड नहीं कर सकती तो जो लो इनकम या मिडिल क्लास फैमिलीज है, दे आर नॉट, they can't afford to send their children in private school because फीस देखी गई प्राइवेट स्कूल की तो 1-1 लाख है छोटे छोटे बच्चों की, विच आर नॉट इवन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, लाइक LKG UKG. वेल नोन स्कूल, प्राइवेट स्कूल, DPS Delhi Public School या Bishops या Don Bosco, the fees are so much. What are the government issues? Government initiatives. So schemes नोट डाउन करिए, जैसे वैल्यूएडिशन की तरह. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम टू इम्प्रूविंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन. सर्व शिक्षा अभियान फोकस ऑन universalizing elements education with special provision for girls. Midday meal scheme provide free meals to improve school attendance and nutrition. Impact of initiatives: increase enrollment rate and reduce dropout rates for girls, enhance awareness and community participation in promoting girls' education. What are the remaining issues now? Like higher education remains less accessible to women. एक टाइम आता है जब घर वाले ही बोल देते हैं अब यार 12th हो गई, अब बस करो पढ़ना, अभी शादी कर लो, या तो हायर एजुकेशन मिल नहीं पा रहा, ग्रेजुएशन हो नहीं पा रही, ग्रेजुएशन के दौरान ही शादी हो रहे हैं. So this is something like this gender gap is being seen, and persistent culture like bias and gender stereotype, male dominant family, male oriented family, बॉय चाहिए बॉय चाहिए बॉय चाहिए. यार लड़कियां भी नाम कर रही है रेसलिंग में, देखा गया फोगाट गर्ल्स, फोगाट बहन, गीता एंड बबीता, दंगल मूवी देखी होंगे सबने. So, while India has made sustainable progress in bringing the gender gap and education, continue effort and needed to ensure equal opportunities and all education level and address to deep-rooted and socio-cultural barriers. I don't think we have to read this article, बस हम देखेंगे ऊपर ऊपर से, like this report, All India Survey of Higher Education and Unified District Informatory System for Education. उन्होंने कुछ डेटा दिया है, like 13.79 crore boys were enrolled in school comparison to 12.73 girls, meaning that girls make up only 48% to school population. uh, Impacts of the slew of package to incentive girls to education. The biggest impact has come from simply building more school. If a primary school exists within 1 or 2 kilometer at child home, ये भी एक बड़ा important कि traveling, लड़का चाहे 4 किलोमीटर क्यों ना हो पैदल जा सकता है.
पर फैमिली वोंट अलाउ अ गर्ल टू गो दैट फार, क्योंकि नहीं होता है, सेफ्टी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं फैमिली के, या घर में भी काम होते हैं, लाइक काम कौन करेगा, स्कूल जाएगी. So like this have been enormously growth in number of schools, especially in while we have in saw a spike in enrollment of girl nationwide, says Vimala Ramchandra, former professor at National Institute of Education Planning and Administrator at First Nation, director of Mahila Samikiya, a flagship central government program on education, rural and girl child. यहाँ पे वेरियस स्टेट का डेटा दिया हुआ है. फिर से आई एम रिपीटिंग, मेन 65 में कवर होगा विजन के, यू कैन प्रेफर टू. बिगेस्ट चैलेंजेस पढ़ चुके हैं हम, लाइक रिमेनिंग इश्यूज, इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. So we have covered this article in detail. We have come to an end with today's The Hindu. टोटल 8 आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किए हैं. थैंक यू एवरीवन watching till end. Please share with your friends, do like this video, comment if you want to, like, comment if you feel like I need to improve in some things, that you should please comment and tell me like how I should improve. Thank you guys. Subscribe to my channel, share with your friends. Enjoy your day. Have a productive day ahead. Bye bye.